कैसे कर सकते हैं मंडला। तो बेसिकली ऐसे तो मैं वेलकम श्वेता, बट I want to start the some set up some context. Usually the mandala, it appears as these kind of intricate drawings, and one of the mandala that we regularly see in our houses is the rangoli. Yeah. So what is the what is the say, source of such designs and such patterns? Of course, right now it's the way it is written, that art therapy, meaning it's being used as a meditative tool. Right now many people use it as a tool. Even like art therapy is for say people who are mentally thoda sa excited, to calm us down, because if you have a pen, pencil, colors in your hand, and you're working with your hands, then you tend to calm down, because now your attention is on your hands. uh, so that is the way, but the source of it is in the beginning. Like we have architecture right now. So Shilpa Shastra means, I think both will know more, but Shilpa was one of the form of uh, like how to construct a building. These scriptures decide. And then there is scriptures called Agama, which describes all or says actually practically designed, like how can you create or construct a temple for high energy. So it's also from the sacred geometry से ये आर्ट थेरेपी या मंडला सब आया है, और इसका ओरिजिन काफी पुराना है. इट्स नॉट कि अभी 100 या 200 इयर्स में ही ये आ गया है. द टेम्पल्स ऑफ इंडिया, I think both will be able to highlight more, but the proportions, the proportions we see in our temples, but where it came from the nature. कि नेचर में सब कुछ एक तरह से, एक पत्तियां एक तरह से दिखती है, the shapes are similar, and how the universe or the star system or the star patterns या leaves, rocks, एक ही तरह का जो patterns होते हैं. The honey bee pattern, natural forms में कहाँ पर patterns दिखाई देते हैं. ये उन सब चीज को स्टडी करने के बाद ज्योमेट्रिक रेशियोज कौन से, you must have heard that what is the most beautiful say ratio of a face, कि फेस का कौन सा बोन स्ट्रक्चर में कौन सा स्ट्रक्चर फेस का होता है, तो वो ऑटोमेटिकली खूबसूरत लगने लगता है. तो इस तरह का आपने कुछ ना कुछ ऐसे सुना होगा. बट एनीवे, आई वांटेड टू जस्ट गो हियर, एंड बिकॉज ये वाला जो मैं बता रही थी, द अगमा आर द कलेक्शन ऑफ संस्कृत स्क्रिप्चर्स फॉर टेम्पल कंस्ट्रक्शन. So exactly where the idol will be placed, what kind of a structure, from the gate, from that entrance to the where the deity is placed, what is the geometric uh, angle between the top and the bottom, ये सब scriptures में लिखा हुआ है. Only what they did, the architects of say 100 years ago, who have created those huge temples in say south, or even I went in Khajuraho, is that they have replicated those geometric construction theories from agamas, and created the temple. That's why if you have seen or heard that when you go inside a temple and when you go to the center, there is always this, in our families also, that we want to see the deity. Why we want to see the deity is that, which is in the center, is that there is certain geometric way that it has been created, it has been structured, or
been built over there or kept there कि वहां से इतना एनर्जी वहां पर होता है कि इवन देयर इज एन हीट क्रिएशन. अगर आप टेम्पल्स में देखोगे तो पानी क्यों इस तरफ से वहां पर या चढ़ाते हैं, क्योंकि वो एक ट्रांसफॉर्मेशन ही मतलब एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करने के लिए वो बिल्कुल उपयुक्त एक रेशियो बनाता है. एंड वहां पर हीट भी काफी आपको दिखाई देती है. एंड ऑफ कोर्स दैट हीट और दैट एनर्जी इज आल्सो ट्रांसफॉर्मिंग. दैट्स व्हाई दिस होल attraction in our temples is to go to that exact place where that deity is there. तो ये तो उसका हो गया सोर्स. पर जहां पर मैं शुरू कर रही थी कि यहाँ पर मैंने जिस तरह से देखा है और सुना आर्ट थेरेपी के रूप में या ज्योमेट्री मेडिटेशन के why I am so think because when I started doing this it really made a lot of sense to me, like when I was this lady Neetu Chhaja, she is from Rajasthan, Jaipur, but she has this beautiful, now this is also a mandala painting. So वैसे तो it is so beautiful, but intricate अगर आप देखेंगे patterns are repeating and they are like they create an whole kind of a visual which is so attractive to look at. And also like in this though of course it is an eye, but a eye of a different, I mean you can see, this is my interpretation, but you can interpret a painting or mandala painting and find out what it actually means. So I have also like I wanted to just share that doing this, it gave me a lot of peace, and just to have that pen and pencil in your hand has given me a lot of happiness and peace. The other thing I want to tell you about this, I did 4 years, I think, ago with this. She is Mumbai based. She's called Preeti Mistry, and I did a whole, like I think a 10-day course. तो वो बोलती थी कि कोई इतना ज्योमेट्रिक, जैसे बाकी सब जगह पे हमको कॉन्सेंट्रिक सर्कल से ज्योमेट्रिक शेप्स बनाने के लिए बोलते हैं, बट शी सेज कि आपका जिस तरह से भी हाथ चलता है आप उस तरह से भी कर सकते हो. And for 4 years ago I discovered her and I did this soul art therapy with her. And in that she used to tell us ki when you are doing that mandala, you also try to not only do it but get into it so much that you can actually whatever things come to you, like in your mind, maybe like a song just comes to you, or a thing, or some messages or something, and later on just with that thing, it is a meditation. So in meditation you may get messages or you may get some ideas. So she thought that doing a mandala can, of course it is already reflecting कि आपके अंदर है तभी तो आप वो बनाओगे, but the other way, while doing the mandala, what you think or what you perceive or what thoughts come to you also may have messages for you or your life or whatever situation. So that much from my side. So I can later on show you more art or pieces or mandala pieces and some very simple one way of doing a smallest of the mandala. But right now I'll stop and then you or both can speak up. Welcome both. थैंक यू मैडम. हमने शुरू कर दिया था. आपने बनाया कभी मंडल आर्ट? वो 10 days का आपने बनाया?
मैंने बहुत सारे मंडाला बनाए। एक तो मैंने ये गौरव जो जी। ग्रुप में बनाया था, अभी ये जो मैंने रिसेंट वाला बनाया था, ये थोड़ा सा बड़ा बना दिया था। अच्छा। ओ हाँ, ये तो बड़ा ब्यूटीफुल है। हाँ, तो इसमें क्या है, ओ, इसमें ये तो एलिगेंट, इसमें ट्रायंगल भी है। इसमें एक्चुअली मेरा थॉट क्या था, जब मैं इसको बना रही थी तो मैंने बहुत कुछ पढ़ा सुना था कि क्रिएशन के बारे में। तो मैंने सोचा जब मैं मंडला बना रही हूँ तो वॉट एवर इज अच्छा। कमिंग इन माई माइंड, आई शुड ऑल्सो इनकॉर्पोरेट दैट इन दैट मंडला। अब वैसे तो उन्होंने मुझे बोला था कि जब हम करा रहे थे कि कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनाइए, तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में है ना, दूसरा अपना डिवाइस ऑन करके कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स जैसे उन्होंने बोला था वैसे तो प्रोटेक्टर के साथ हम 3 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर का कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बना के मैंने ये बनाया था। बट से सपोज हम बड़े हो गए, अब हमारे पास कंपास बॉक्स नहीं है, तो देर इज ऑल्सो अनदर वे। मैं तभी दूसरा डिवाइस करके करना चाहती थी कि जस्ट हैव अ स्ट्रिंग एंड अ पेंसिल, और इसको रेडियस बना के जस्ट क्रिएट अ सर्कल हम्म, and then make small whatever like patterns, uh, either a circle or a leaf or whichever is like whatever comes to you. These are the basic mandala ke patterns, and then create and fill that circle with those patterns with pencil only. And then when your whole mandala, say if today you want to do only one, say 1 hour or half hour, so that much, like for me today I just wanted to show a simple one with almost like what, 2.5 centimeter radius का circle. तो वो मैंने सिर्फ पेंसिल ऐसे करके इसको पिन करके ऐसे रेडियस से बना दिया था। तो मैं जब सेकेंड डिवाइस कनेक्ट करूंगी मैं आपको दोबारा से बताऊंगी मैंने क्या किया था। वो थोड़ी आवाज इको हो रही थी। यस, डेफिनेटली। और जब मैंने आर्ट थेरेपी की था तब उन्होंने, वैसे तो हमने बहुत सारे पेपर्स में बनाए थे, बट एक बुक भी हमने खरीदी थी। तो वो बोल रही थी कि शुरुआत में अपने आप को बहुत इंट्रिकेट डिजाइन से परेशान मत करो। तो ऐसे छोटे छोटे उन्होंने हमको एग्जाम्पल्स दिए थे करने के लिए। So it's so simple. Just concentric circles and something. So in the beginning, you don't have to, like go into very intricate. जैसे जैसे नीतू उन्होंने तो कितना intricate बनाया है। So in the beginning, when you don't have so much of concentration or so much of time with you, just go with simple or smaller kind of patterns. आपको पता होगा जब हम रंगोली सीखते हैं, मैंने तो जब बड़े मतलब आंटी और दीदियों से सीखा था, वो लोग भी बोलते थे तुम छोटा सा बनाओ, 3 डॉट का 5 डॉट का रंगोली बनाओ, फिर देन यू ट्राई टू मेक 10 डॉट का रंगोली और बड़े डॉट का रंगोली। तो वो सेम सेम थिंग अबाउट दिस मंडला ऑल्सो। So basically mandala means repeated patterns, and when you do it, it's a kind of meditation. And the source of it is all these scriptures that we have, that now that geometry and that mathematics की ये क्यों ऐसे ratio बना के exactly why the temple that deity is should be placed there. This is another science which is different. Like I don't want to touch into onto that also, into that. Yes, that much from my side. आप लोग तो चुप ही हो गए इसके लिए मैं I don't know what to say. No, no, we are just listening to you. There is nothing from our side, matlab from my side to contribute. Yeah. और इसमें कोई मिर्च मसाला भी नहीं है। No, no. अरे but दो दो अनुराधा जी। नो, बट जब अनुराधा ये एक्सप्लेन कर रही थी ना, मतलब मैंने मंडला को कभी इतना डिटेल में सोचा नहीं जिस तरीके से, तो आई वाज जस्ट गूगलिंग इट, व्हाट डज इट मीन बाय मंडला इन स्पिरिचुअल वर्ल्ड एंड ऑल। आई कुडंट गेट द मीनिंग, बट मुझे एक चीज लगा कि ये जो
मतलब आई डोंट नो बट ये अपन के जो चक्रास होते हैं, अपने जो 7 चक्रास होते हैं, उसमें भी सर्कल होता है, उनका भी एक मतलब पता नहीं, आई डोंट नो उसका क्या रिलेशन है इससे, बट दैट वाज कमिंग इन माय माइंड व्हेन यू वर एक्सप्लेनिंग इट. सुंदर, अति Exactly. सुंदर. Exactly. Like actually, if I connect with two devices, I really don't know how to not echo. That's why I left from that device. वरना वो हाँ, तो चक्रास भी of course सर्कुलर ऐसे दिखाए जाते हैं. I don't want to like either say agree to it or disagree to it. Of course, whatever is outside, like will be reflected in our chakras also. और chakras जो होते हैं, वो अगर आप उसको सोचो कि chakras क्या है, so they are the points where most of our nadis or most of our energy is getting transformed. तो नेचुरली जो जहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन या कुछ दो चीजें साथ में मिलके कुछ हो रहा है, तो वो पता नहीं कहाँ से वो इट विल क्रिएट अ फॉर्म. और वो तो हमको दिखाने के लिए बोलते हैं कि चक्रास जो है वो सर्कुलर होते हैं ताकि हम समझ सकें. बट और चक्रास के अंदर भी अगर हम जाएंगे, उसके अंदर भी delve into it, every chakra has a symbol of different leaves. Say suppose Mooladhara is shown by 2 leaves, sacral is shown by 4 leaves, here Vishuddhi is I think 6 leaves, और यहाँ पर Sahasrara it again goes to 1000 petals. तो वो पैटर्न भी इंक्रीमेंटली डिफरेंट होता जा रहा है हर लेवल. वो भी एक मंडला का भी एक वो है कि वहां पर भी हम लोग मंडला में भी एक ही पैटर्न को उसको वाइडन अप कैसे कर रहे हैं, उसको अलग अलग कैसे कर रहे हैं, वो भी वहां पर मीन्स धीरे धीरे हमें समझ में आता है. व्हेन वी गो एंड ड्रॉ मोर मंडलास, वील अंडरस्टैंड कि कैसे हम लोग उसको एक ही पैटर्न को बट डिफरेंट रेशियोज में बनाते हैं. थैंक यू. और मैं क्या बोलूं, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग.